नेट के इशू, वेट कर। Hello, dear friends. Welcome to my channel In-Depth Analysis with Nitish. So here we are. We have come to the final day of the Asia Cup 2024 in the T20 format. And as we all know, the two teams which has played before yesterday are playing today. And today will be very interesting game between both these sides. That is Sri Lanka versus Pakistan. And both these teams eager to get the trophy, बिकॉज ना श्रीलंका ने काफी दिनों से जीता है और पाकिस्तान ने भी काफी दिनों से एशिया कप का ट्रॉफी नहीं जीता है। तो आज एनालिसिस का डेफिनेटली यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। और आपका स्वागत है इन डेप्थ एनालिसिस विद नीतीश में। और देखते हैं कि आज का मैच किस तरह से होता है, कौन कौन से प्लेयर्स दोनों टीमों के इंपॉर्टेंट होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोस को, मेरे चैनल को, और कृपया ज्वाइन कीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप कृपया ज्वाइन कीजिए। उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं एंड हैव अ डिस्कशन विद मी अबाउट टुडेज गेम, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट गेम है। किस एशियन साइड को ट्रॉफी मिलता है, कौन सा एशियन साइड T20 फॉर्मेट में एशिया कप जीतती है। पहला इनॉग्रल जो T20 फॉर्मेट पे एशिया कप हुआ था 2016 इन बांग्लादेश। एंड एज वी ऑल नो, पिछले कुछ वक्तों से इंडिया डोमिनेट कर रही है एशियन क्रिकेट में, और इंडिया ही जीती थी पिछले 2 एडिशन का एशिया कप। तो ये इंटरेस्टिंग होगा, हम लोग को नया चैंपियन देखने के लिए मिलेगा। और डेफिनेटली देखते हैं आज का मैच कैसे किस तरह से होता है। और शुरुआत करते हैं हम लोग इस डिस्कशन का, इस एनालिसिस का। और जैसा कि मैं आप लोग के नीचे दिख रहा होगा कि निशंका, हसरंगा, मेंडिस और दशुन शानका विल बी द की प्लेयर्स फॉर श्रीलंका टुडे। और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान will be the key players for Pakistan as far as my knowledge is concerned in the today's game. Toss again will play the crucial factor for both the teams, but if I want to tell you that today I think the toss, my gut feeling says that जो टॉस जीतेगी, इनफैक्ट जो टॉस जीतेगी वो फील्डिंग डेफिनेटली करेगी, लेकिन टीम जो पहले बल्लेबाजी करेगी, मुझे लगता है आज वो टीम जीत जाएगी। मेरा ऐसा गट फीलिंग आ रहा है कि अगर वो टीम अगर बना लेती है 160 प्लस 170 प्लस, ये कोई जरूरी नहीं कि 200 रन ही बना के फाइनल का एक एडिशनल प्रेशर लेके आएगा दोनों टीमों पर। पाकिस्तान पे ज्यादा प्रेशर होगा, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे दोनों टीमों के लिए एक अच्छा मैच होने वाला है। इंटेंस थ्रिलर की उम्मीद हो सकती है। एशिया कप में ऑलमोस्ट 80% ऑफ द गेम्स जो हुआ है लास्ट ओवर तक गया है, और इवन कितने तो सेकेंड लास्ट बॉल तक भी गया है। तो उम्मीद है कि आज का मैच जो होगा वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। मेरे लिए श्रीलंका स्लाइट फेवरेट होगी। पाकिस्तान इज एन अनप्रेडिक्टेबल साइड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। पाकिस्तान में कम हार्ड, कौन सी पाकिस्तान क्रिकेट टीम आती है मैदान पे वो देखना पड़ेगा, लेकिन श्रीलंका अच्छी क्रिकेट खेल रही है। लेकिन वन मोर एफर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम देम टू लिफ्ट द ट्रॉफी। वहीं पाकिस्तान के लिए होगा कि अच्छा खेल का परफॉर्मेंस दे, और उनके बॉलर्स काफी अच्छे हैं पाकिस्तान श्रीलंका के बनिस्बत। तो कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जो लाइनअप है वो काफी तगड़ी है और काफी अच्छी है। तो देखना पड़ेगा इस कि किस तरह से पाकिस्तान टीम हैंडल करती है प्रेशर को। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सबसे बड़ा जो होगा, नसीम शाह और शादाब खान का कमबैक होने जा रहा है। नवाज उनके अच्छे बॉलिंग में है, रिदम में है, बॉलर्स उनके, ऑलराउंडर्स उनके। तो यहाँ पर जिम्मेदारी लेना पड़ेगा बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को लेना पड़ेगा जिम्मेदारी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, तीन में से अगर कोई एक खिलाड़ी ओके
Okay, so Pawan wants to come because today is a very important game for him and for his country. I think let's hope that Sri Lanka will do well. Come on, Pawan, cheer up for Yeah, Sri Lanka cricket. I think after a yeah, very yeah. long time, Huge, after a huge. very After 8 long years. time, yes, yes, After eight after a years. very long time, Sri Lanka are through to the final, and the way they are performing, and the jinx have already broken in the first game onwards. Mm. Because if you can't say if Sri Lanka could have winless till here, I could have said that Sri Lanka may struggle in the final. But the loss is already on their backside with the Afghanistan. They were defeated handsomely in the first ODI, first T20I, sorry, in the Yeah, league phase. I think the jinx are already broken. Now they have to put one more effort sincerely and mm. with determination to lift the trophy. And my gut feeling says today that toss, the team who wins, the team, no matter what happens at the toss, I think the team will win the toss, definitely bowl first. But Yeah. my gut True. feeling says that the team will bat first, will win today. This is my I don't think. instinct. I think if the team is batting first, I think they have to put 180 plus. I think they have to put 180 plus because we saw what happened in the finals also last year in the 2020 World Cup. Also, it was in Dubai. Also, New Zealand put 170 and it wasn't enough to win the game. So I think 185, Mhm. 190 is a must. Teams batting first, 185, 190 plus is a must. If they want to win this match, it doesn't matter about toss also. I think they if they put a competitive total for the opposition and under pressure, I think the team chasing will struggle. But if they don't put 185 or 190, I think the team chasing will win. So it's And matter of putting now a I want to ask you a question. If Pakistan suppose bat first, and if yeah. they get around 160, 170, then Hmm. definitely I think Sri Lanka will be under huge pressure against a top quality bowling lineup. I don't. I think 175, 180 could be, but I don't think Pakistan, especially their fast bowling, is the strong link. If we can survive, if Kusal Mendis and Nisanka survive in the first 6 overs, I think Sri Lanka can somehow go do this well. I know Sharaf Khan didn't play in the last match, but still, I think the main threat for Pakistan is actually Mohammad Nawaz, not Sharaf Khan actually, because Mohammad Nawaz has had a brilliant Asia Cup so far. He's being amongst the wickets also. He did really well against India. So I think he's the threat more than Sharaf Khan. Sharaf Khan actually doesn't get the wickets, but actually allows Mohammad Nawaz to actually control that phase. Actually, Sharaf Khan is the one who tries to ensure that Sri Lanka don't get runs. It's Mohammad Nawaz who does the main damage. So I still think Sri Lanka, if I think 180, 185 should be, because I think Sri Lanka are good at chasing. I think 170 plus, we saw what happened thrice. Even if Pakistan have a good bowling lineup, I think they're missing Shine Shafir. That's a big blow. As I said in the start of the tournament, I think still I think this Pakistan fast bowling lineup, if we can cope against Nasim Shah and Shadab Khan, I think Hmm. this Sri Lanka team can somehow win for sure. Now, and see, toss is not in anybody's hand. Suppose I am asking a hypothetical. See, this situation may come. Toss may not go in favor of Sri Lanka today. Suppose Sri Lanka bat first. What will be their strategy? What will are they in the from the first ball onwards? They go hard, or they wait for 4 or 5 overs. If they don't lose wicket, they can go. At least I think seven. They if they keep wickets in hand, they can go hard at I last think they eight to should nine be a bit overs. careful with the new ball. That's the thing. So that if we lose the toss in case, I think the best thing is not to attack from the first ball itself. Try to actually play the balls across the gaps. Don't try to nick it towards the keeper and trying to go toward the offside place. Try to actually find the gaps and take those singles, take those twos. Try to combat against Nasim Shah and Mohammad Hasnain straight away. Don't be aggressive. I think Pathum Nisanka is not a batsman like that, but I'm a bit concerned about Kusal Mendis because he's the one who can go aggressive a bit and perhaps lose his wickets. So if they can play freely, I mean, play towards the gaps. Don't try to play towards the fielders. Try to be a bit sensible. It's okay. Somehow it doesn't matter if we can score boundaries immediately. Try to get those ones and twos immediately. Don't give that much dot balls to the Pakistan fast Hmm. bowlers and create unnecessary pressure. So we have to get those singles and twos, and eventually the boundaries will come. When they bowl loose balls, then we can
play those boundaries. That's what I think it should happen. But we need to be very very careful batting first, because we No, know what no. happened What when. will be the minimum scores that Sri Lanka should score if they bat first? What will be the I think minimum they I can think defend? 175 plus. I think 175, at least 180. We have to get 180 in the final. I think Means it's a must. 180. I am telling 180, 190 today will be the winning total for Sri Yes, Lanka. agree, And for agree. Pakistan, anything around 170, I think they have the bowling lineup to cope up with these batters. But you never know Sri Lankan batters, the way they are playing. I think today it's going to be the very interesting one, I'm telling you. And toss again will be the crucial factor. Let's hope that your team do well either with the see all round performance definitely will lift the trophy. Any side can lift the trophy if they perform all round in three But I think it's departments. anyways a win. Anyways, if we lose today also, I think it's a win already for Sri Lanka in this tournament, because no one expected Sri Lanka to do this well and reach the finals. I know we had to go to that one extra step, but Then I think Sri Lanka don't have to play the game. I think if you are happy with we Sri are not Lanka saying have that, gone. Nitish. I'm not saying that, Nitish, but it's already. I think it's already a victory already, because we beat India, we beat Pakistan in the group stages. I know that we're going one step extra. We're trying to win this somehow. That's the main target. But even if we lose today, I think there's so many positives for Sri Lanka to take in this tournament and go head to the 2020 World Cup and do this kind of performance in the 2020 World Cup as well, because we don't have any matches for 1 month. No, no. But if you win the trophy, then it will be a great boost up. No, that okay, we Yeah, can that is win. We true. can at That least is go true, through but the it's not in our semi-final of hands. the No? T20 World Cup. Nitish, is not in our hands. No, toss is in our hands. If we bat first, we have to get 180. If we don't get 180, we'll definitely lose the match. I can tell you over there, we have to get 180 or 185. It's going to be difficult to defend And 160, if Sri Lanka, 170, suppose I am 175. telling you, if Sri Lanka will get around 185, 190, then what's your Yeah, then I think Sri Lanka can defend it. I think Sri Lanka can defend it for sure. If we can get Rizwan, Babasam, somehow Lahiru Madhushankar and Asito Fernando get some early wickets, and then Hasaranga comes into play, I think Sri Lanka can somehow win. We have to get 185, 190. That is a must if we are going to win this, for sure. and any changes? Have you got any news regarding Gunatilka and Charita Salanka? I think Charita It Salanka might play. This is what I'm thinking, but I don't. We haven't got the sources yet so far. But I feel Dhananjay De Silva is definitely going to play. Is what the sources say, but not really sure about the other changes yet. We have to see. It will come in the next 10 minutes, I think. Yes, yes, toss and team composition are coming within 7 8 minutes. I think let's hope that I think today toss. I don't know what is happening in UAE from the last year's World Cup. What I am observing that team winning second. I think the team winning first is not getting enough runs on the board. And Hmm. even if they are getting enough runs on the board, they are not bowling well up front with a new ball. Hmm. I think early wickets while defending a total around 170, 180, at least 2 wickets you required in the first power play, 6 overs. Within Hmm. 6 overs, you required at least 2 wickets. And see, Pakistan batting lineup is vulnerable. I'm telling you, Pakistan batting totally depends on three personnel, Babazan, Rizwan, Babar, and Fakhar Zaman. That's it. I think if they get 2 wickets, see, anyone can come and on the day and can hit 50, 60 runs. But actually, if you observe this Pakistan batting lineup, will they chase two times 180 runs? I think they have struggled to chase 125, 130 against Afghanistan. Yesterday, day before But yesterday, we I have think that was seen a they. different pitch, Nidesh. That was a very difficult batting pitch at Sharjah. I don't think that was a good batting track over there. It was for bowlers, I think, over there in Sharjah. That's why both Pakistan and Hmm. Afghanistan struggled to put runs in that pitch, because it was used pitch. So I don't think today that's going to be the case. I think it's going to be a very good batting Today will track. be the But fresh pitch they are using. I think the first game they have used now against India and Pakistan. That yeah, will be the. Uh, yeah. I think it will be the same pitch as what they played on Friday. I think it's going to be a bit no, no, similar. no, no. The phrase no same. You can say same type of pitch that will be, but they are using the same pitch. I think the fresh pitch will be there today in today's game, and Maybe, they maybe because bounce. there was a Monday off.
because there's one day off. Perhaps they could, the curators might have changed a bit, but still, I think it might be a very good betting track, because in Dubai usually it's a very good betting track. Teams betting first should take the advantage and go for that 185 man night. That's what I'm saying. 170 is not enough to defend, especially I know there's not been much due, but still, if batsmen settle in the Hmm. second innings, especially with the conditions, Hmm. because it's winter time a bit, if they can settle, then they can win the match possibly if they settle in this condition. So Hmm. that's what I'm saying. Teams Hmm. batting first should get around 185, 190, take the Hmm. advantage of the track here, the Hmm. pitch over there, and try to score as much as runs possible. Hmm. True, true. And which batters are you banking on for Sri Lankan team that will get a sufficient run? Batters I'm talking about. I'm hopefully thinking. I don't know. I mean, presuming how they're performing, they could, but I haven't seen since the Afghanistan match batting first how Sri Lanka will do well in the finals. It's depending on how they are practicing the nets, how they've done during the I mean net sessions, and also I cannot predict seeing how they've batted first so far, because they've only batted Hmm. once. Unlike Pakistan, who batted about twice or thrice, we won the toss four Hmm. times. We have chased. In chasing, I can say Sri Lanka will somehow chase 175, 180, even if Pakistan put the target. I don't think Sri Lanka will go under pressure. I think Sri Lanka middle order somehow can save Sri Lanka this time around with Banuka, Dasun Shanaka, Hasarang performing. I think Sri Lanka can chase 170, 175. But in Hmm. case we Hmm. bat Hmm. first, I think we must get around 185, 190 to be on the safe side and put Pakistan under pressure. Put 185, 185, I think this Pakistan middle order will struggle, because they always shuffle. They put Shadab Khan, Mohammad Nabas, Asif Ali hasn't been in good form. I think if we can get the Hmm. top three out during the power play, I think Pakistan will struggle for sure if we put 180 plus. If we put. Hmm. Let's see. I think the toss is coming up within a couple of minutes, so we can discuss. We continue with our topic. So, what you see? This is mine. This is mine. I see. This is mine. One. These are the key players. As everybody knows that Nisanga is in good form. Mendes one day off, but he can turn the game. Saneka will be the key, at least if Nitish, I have to leave a bit. I'll come back a few okay, minutes okay, later. okay. You can. Thank you for joining, and please. ओके दीज आर माय की प्लेयर्स, ये मेरा की प्लेयर्स है। और देखते हैं कि टॉस अब होने वाला है बस 2 मिनट्स में, कपल ऑफ मिनट्स वी आर गेटिंग द टॉस। अभी एक श्रीलंकन फैन जो मैं रेगुलर मेरे चैनल पे आता है, और वो उसने डेफिनेटली कहा है कि श्रीलंका कैन चेस एनी टोटल विद दिस बॉलिंग अगेंस्ट दिस बॉलिंग लाइनअप आल्सो। एनी टोटल मींस 170 180। लेकिन देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किस तरह से मैच होता है। टॉस विल बी वंस अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। लग तो रहा है कि सबके जुबां पे टॉस है, बट मुझे लग रहा है कि फाइनल सेमीफाइनल ये सब ऐसा सिचुएशन होता है कि आपको बैटिंग करना चाहिए। बैटिंग से रन आप लगा दो बोर्ड पे, और उसके बाद सामने वाले कितनी अच्छी बैटिंग लाइनअप हो, कितना भी कंडीशन बैटिंग के लिए कंड्यूसिव हो, सामने वाली टीम प्रेशर में आ जाती है। तो देखना पड़ेगा। कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियोस को, शेयर कर कीजिए वीडियोस को मेरे, और देखते हैं क्या होता है आज के मैच में। और बस 1 मिनट में टॉस होने वाला है, एंड प्लीज बी विथ मी, और हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या टीम चुनी गई है 11 बोथ द साइड्स, और देखते हैं कौन सी टीम टॉस जीतती है। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग मैच ये होने वाला है, और जिस तरह से ये मैच हो रहा है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये मैच। देखते हैं टॉस का क्या होता है। बस 1 मिनट में टॉस हो जाएगा। हम मेरे साथ रहिए इसी वीडियो पे, देखते हैं क्या टॉस किसके हक में जाता है और कौन सी टीम। हालांकि दर्शन शानका ने अपना जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कल या परसों वाले मैच में, तो उन्होंने कहा था वी आर रेडी फॉर टू बैट फर्स्ट, और शायद वो मेंटली रेडी हैं इस चीज के लिए। अगर कोई टीम 170 प्लस भी करती है, मुझे लगता है कि फाइनल में वो सफिशिएंट होगा। आप ये नहीं देखना चाहिए कि पिछले साल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की दो अलग टीमें थी, दो अलग माइंडसेट से खेलती है, उसमें जो जो टीमें अच्छी थी वो टीम जीत चुकी है। तो देखते हैं टॉस क्या क्या होता है। वी आर रेडी फॉर, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स प्लीज, 2 सेकेंड्स।
One second. यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट आया है कि पाकिस्तान बाबर आजम ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है, एज एक्सपेक्टेड था। और मुझे लग रहा था यहाँ पे कि बाबर आजम के हक में टॉस जाएगा, लेकिन नेवरदलेस इफ यू आर मेंटली रेडी देन यू कैन सेट अप एनी टोटल। 180 190 बनाना चाहिए श्रीलंका की टीम को देखना पड़ेगा कि आज क्या होता है। My instinct is saying once again the team bats first will win the game today। शायद ऐसा मुझे लग रहा था। इट अ बिट लाइक चैंपियंस ट्रॉफी की तरह हो रहा है ये जिस तरह से एशिया कप हुआ है। तो देखते हैं कि श्रीलंका टीम किस तरह से, एक अच्छा शुरुआत देना पड़ेगा श्रीलंका टीम को और शुरू के 6-7 ओवर में विकेट ना गवाएं वो टीम, और डेफिनेटली वो टीम जीत सकती है मैच। अगर आप मिनिमम 170 बनाना चाहिए यहाँ पर। 180 190 will be a very good total on this wicket। Let's see how it happen। और टीम कॉम्पोजिशन में बताना चाहूंगा आपको, बस कुछ ही देर में मैं टीम पर डिस्कस करूंगा, यहाँ पे एनालाइज करूंगा। तो पाकिस्तान ने, द बिग अपडेट इज दैट पाकिस्तान हैज वॉन द टॉस, बाबर आजम एंड ऑप्टेड टू बोल। तो यहाँ पर पाकिस्तान टीम ने टॉस जीत लिया है, अब बॉलिंग का फैसला किया है। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा टीम कॉम्पोजिशन। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ पे जो टीम है, दोनों टीम में पाकिस्तान टीम ने जो पिछले मैच में जो 2 खिलाड़ी को बाहर किया था उनको एंट्री करवाया है, जैसे हसन अली और कादिर को बाहर किया है, और उसके जगह पे सादाब खान और नसीम शाह को एंट्री मिला है। और वहां पे श्रीलंकन टीम ने लास्ट मैच से कोई चेंजेस नहीं किया है यहाँ पे, और उम्मीद था कि 2 चेंजेस ऑलमोस्ट होंगे, गुणतिलका के जगह पे चरिता सलंका और मधुशन के जगह पे असिता फर्नांडो। वेल, ऑल सेड एंड डन, आई थिंक पाकिस्तान हैव वॉन द टॉस एंड बॉलिंग फर्स्ट। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन दिस गेम। और श्रीलंका को यहाँ पर थोड़ा सा समझ बूझ के ओपनर्स को खेलना पड़ेगा, एकदम हार्ड नहीं आना चाहिए और डिवास्टेटिंग नहीं होना चाहिए। शुरू में 3-4 ओवर में अगर विकेट बच गया तो ये स्कोर बना सकती है श्रीलंका 190-200। एक बार 190-200 बन गया तो इस मैच में फिर कुछ भी हो सकता है, श्रीलंका जीत भी सकती है। लेकिन अभी तक का ऐसा लग रहा है सिचुएशन कि बाबर आजम के फेवर में गया है, थोड़ा सा लक। टॉस जीता है, बट ये फाइनल है और इसमें कुछ भी हो सकता है। फाइनल, सेमीफाइनल, ये ऐसा सिचुएशन होता है कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल बी मोर रिलैक्स्ड। अगर वो टोटल रन कर देती है तो बॉलिंग आपको अच्छी करनी पड़ती है थोड़ा सा, और अगर शुरू में 1-2 विकेट झटका देगी सेकंड बॉलिंग करते टाइम तो डेफिनेटली टीम बैटिंग चेसिंग जो करते रहती है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है मैच में। प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस की किस तरह से पार्टनरशिप होती है यहाँ पे। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोस
और लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अभी टाइम बचा हुआ है तो थोड़ा सा और मैं रुकना चाहूंगा यहाँ पे। और पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया है, 2 चेंजेस उन्होंने किया है। नसीम शाह और उस्मान कादिर को के जगह पे शादाब खान को मिला है मौका, और हसन अली के जगह पे फास्ट बॉलर नसीम शाह। तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये मैच होता है। इंटरेस्टिंग होने वाला है ये मैच, और इतना आसानी से कोई भी टीम नहीं जीतेगी, क्योंकि ये एशिया कप का फाइनल है, और जो भी टीम जीतती है हम लोग को नया चैंपियन मिलेगा डेफिनेटली। एंड होप दैट बोथ टीम्स प्लेज वेल टुडे। और क्या मैच देखते हैं किस तरह से कौन सी टीमें अच्छी क्रिकेट खेलती है। बॉलिंग, बैटिंग, सभी डिपार्टमेंट में आज आपको अच्छा करना पड़ेगा, दोनों टीमों के लिए है ये। और लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अब मैच स्टार्ट होने में बस कुछ ही देर बाकी है। लेट्स सी। मेरे लिए ये सब खिलाड़ी जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे बोथ द टीम्स के लिए। मेंडिस, हसरंगा, सनका, पथुम निशंका, और उधर नसीम शाह, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के लिए। So important toss for Pakistan to win, and Pakistan has won the toss and elected to bowl first. Let's see how the top order of Sri Lanka play today. And एक तो ऐसा नहीं है कि दोनों टीमें इनविंसिबल आ रही है। दोनों टीमों ने, एक टीम ने 2 मैच हारी है, तो एक टीम 1 मैच हार के यहाँ फाइनल में एंट्री करी है। तो देखना है किस तरह से दोनों टीमें खेलती है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा जिस तरह से बाबर आजम ने टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला लिया, और डेफिनेटली जो बॉलर्स हैं वो डेफिनेटली हार्ड आएंगे श्रीलंकन बैटर्स के ऊपर। और देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये मैच होता है। कोई चेंजेस नहीं किया है श्रीलंका की टीम ने। आई डोंट नो, शायद ये थोड़ा सा असिता फर्नांडियो के लिए हार्ड लक फॉर हिम, अनफॉर्चुनेट फॉर हिम दैट ही डू नॉट मेक इन द प्लेइंग 11 टुडे। बट नेवरदलेस श्रीलंका विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रही है। यहाँ पे गुणतिलका, जो कि उन्होंने बीच में एक अच्छी पारी खेली थी, लेकिन मुझे पर्सनल ओपिनियन मेरा था कि आप चरिता श्रीलंका को रखना चाहिए था, क्योंकि वो एक बड़ा मैच का प्लेयर है और एक अच्छा प्लेयर है गुणतिलका से। तो देखना पड़ेगा। दारोमदार है भानुका राजपक्षे मिडिल ऑर्डर में, दशुन शानका, चामिका करुणारत्ने और हसरंगा बैटिंग से। और फिर बॉलिंग में आ जाए तो दिलशान मधुशंका, हसरंगा, थिक्सेना, ये सब उनके हैं कुछ बॉलर जो अच्छी बॉलिंग। लेकिन क्या जब बैटिंग के लिए अच्छी हो जाएगी कंडीशन, क्या उसमें वो अच्छा करेंगे, देखना पड़ेगा यहाँ पर। लेट्स सी दैट श्रीलंका डू वेल एंड बोथ द टीम्स डू वेल। और जो डिजर्विंग टीम, मुझे लगता है कि जो डिजर्विंग टीम होगी वही फाइनल आज जीतेगी। जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं वही फाइनल जीतते हैं डेफिनेटली। और डिजर्विंग टीम दोनों है, क्योंकि दोनों फाइनल में गई है, और जो आज अच्छा खेलेगी वही डिजर्व करेगी फाइनल जीतना और एशिया कप को ग्रैब करना। T20 फॉर्मेट में ये हो रहा है। डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट यही है कि इंडिया नहीं गई है फाइनल में। आज श्रीलंका या पाकिस्तान की जगह पे इंडिया रहती। नेवरदलेस, बाबर आजम has won the toss and bowling first. Let's see how it pans out today. It's going to be the very interesting और thriller match ये होना चाहिए जिस तरह से ये मैच हो रहा है। तो we'll meet in the next video. Till then, thank you, goodbye, and please subscribe and like the videos और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं रिव्यू में मैच के बाद, देखते हैं कि किस तरफ ये मैच जाता है और कौन सी टीमें लिफ्ट करती है ये एशिया कप की ट्रॉफी 2022 in the T20 format in Dubai. Thank you and please subscribe to my channel. Thank you.